Welcome back in standard second. First of all, very beautiful morning to all of you. So students, today we are going to study our subject maths. Please open your maths textbook. You should open your maths textbook. Let's open it and come to the page number 85. It's here. See? Our new chapter. It's page number 84. But it is written on page number 85. Okay? So you can find it easily. Please open it. Page number 85. Sorry, my bad. 84 and 85. 84 and 85. So today we are going to learn about lines. We have seen many lines like standing lines. Here we can see that. Here we have a standing line and other one is slanting line. It's called slanting line. And the third one is sleeping line. And you can see other one is curved line. Right? स्टैंडिंग लाइन का मतलब होता है खड़ी हुई रेखा. खड़ी हुई रेखा जिसे हिंदी में बोलते हैं खड़ी हुई रेखा और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन. ओके, सो वी कैन कॉल इट खड़ी रेखा इन हिंदी एंड वी कैन कॉल इट इन इंग्लिश स्टैंडिंग लाइन. Here next one slanting line. What is it? Slanting line यानी कि तिरछी रेखा. We can call it in Hindi तिरछी रेखा and we can call in English it's a slanting line. And the third one is sleeping line. We can call it in Hindi it's a शयन रेखा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे शयन रेखा. And we can call it in English it's a sleeping line. You can see here it's a sleeping line, standing line and slanting line. Okay, let's learn about it. See on page number 84 whose line is it? यानी कि ये lines किसकी है? Whose का मतलब होता है किसकी. Okay, let's see. Today का मतलब होता है आज. Right? We learned already. Right? इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया. So today there is a cricket match in Fatima school. Fatima, Jaspreet and Raima have each brought their own stumps from home. आज की बात है. आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच होने वाला है. आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट मैच है. फातिमा, जसप्रीत एंड राइमा ये तीनों फ्रेंड्स हैं. देखिए फातिमा, जसप्रीत एंड राइमा हैव ईच ब्रॉट देयर ओन स्टम्प फ्रॉम होम. ये तीनों ने अपने स्टम्प घर से लाए. ये तीनों के पास एक एक स्टम्प है. देखिए यहाँ पर है. वी कैन सी इट क्लियरली. इट्स हियर. इट्स नेम ऑफ फातिमा, हिज नेम इज जसप्रीत एंड हर नेम इज राइमा. राइट? ये तीनों अपने घर से स्टम्प लेकर आए हैं. They keep this in a corner of the room. और उन्होंने ये स्टम्प्स को एक रूम के कॉर्नर पे रखा हुआ है. फातिमा keeps her stump in a standing positions. जो फातिमा है उसने अपना स्टम्प स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है. स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ. ठीक है, उन्होंने फातिमा ने अपना स्टम्प है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है यानी कि खड़ा हुआ स्टैंडिंग पोजीशन में. जसप्रीत gives his stump in a slanting positions. और जसप्रीत ने अपना जो स्टम्प है उसे स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है. स्लैंटिंग पोजीशन यानी कि तिरछी तरह से. ठीक है, कुछ इस तरह से जसप्रीत ने अपना स्टम्प रखा हुआ है. एंड राइमा keeps her stump in sleeping positions. और राइमा ने अपना स्टम्प जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में कुछ इस तरह से रखा हुआ है. To show others how they have kept their stumps, they draw lines in a notebook. और उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि उन्होंने अपने स्टम्प्स किस तरह से रखे हुए हैं, इसी तरह से उन्होंने ये सारी लाइन अपनी नोटबुक में ड्रॉ की है. फातिमा ड्रॉस अ स्टैंडिंग लाइन. वो किसी और को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने स्टम्प अपने रूम में किस तरह से रखे हैं. राइट? वो किसी और को बताना चाहते हैं
कि हमने जो स्टंप लेकर आए थे वो हमने रूम के कॉर्नर में किस तरह से रखा था, लेकिन वो सिर्फ बोल के बताना नहीं चाहते। उन्होंने क्या किया, एक नोटबुक ली और फिर उसमें उन्होंने लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया। एक स्टंप आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में हम यूज करते हैं ना, जब विकेट गिरता है या स्टंप होता है, 3 स्टंप होते हैं, राइट, इस तरह से। तो उन्होंने अपने स्टंप कुछ इस तरह से रखे हुए हैं जो कि उन्होंने नोटबुक में लाइन की तरह ड्रॉ करके उन्होंने बताया। यहीं पर हमें दिखाया गया है, you can see it here. Fatima draws a standing line. Who draws a standing line? Fatima. Fatima draws a standing line. Second one है Jasbir. You can see his name is Jasbir. So Jasbir draws a slanting line. Jasbir ने slanting line ड्रॉ की है। Jasbir ने कौन सी लाइन ड्रॉ की है? So Jasbir draws a slanting line. So it's drawn by Jasbir. Right? And next, Raima draws a sleeping line. Or which line is drawn by Raima? So it's a sleeping line. Sleeping line drawn by Raima. Okay? Match the picture of each child with the correct line. आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये तीनों पिक्चर्स को आपको ये तीनों चाइल्ड के साथ मैचअप करना है, ठीक है। जसप्रीत को देखिए यहाँ पर स्लैंडिंग लाइन आपको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देना है। फिर राइमा ने ड्रॉ की है स्लीपिंग लाइन, तो राइमा को स्लीपिंग लाइन के साथ कनेक्ट करना है, जसप्रीत को स्लैंडिंग लाइन के साथ कनेक्ट करना है। और फिर फर्स्ट वन कौन था, फातिमा। फातिमा को स्टैंडिंग लाइन से आपको कनेक्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव राइट इट्स नेम। ओके, मेरी यहाँ पर उनके नेम। Come to the page number 85. We reached at page number 85. It's here. Look at here. What is it? Here are some standing lines. We can see here are so many standing lines. You can see it clearly. First one. In the first one, slanting lines. It's called as slanting lines. And then now draw some more such and sleeping lines. Sorry, my bad. And here some sleeping lines. Now draw some more such lines. और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करनी है। I can draw lines with the side of my pencil box. यानी कि आप जो पेंसिल बॉक्स होता है ना, या फिर कंपास बॉक्स ले ले या पेंसिल बॉक्स ले, उसकी धार के आधार पर आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। देखिए, you can see it. It's here, right? आप भी कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इसे पेंसिल बॉक्स रखना है और यहाँ से यहाँ ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इजी, ठीक है। तो आप कोई भी चीज या फिर कोई भी कंपास बॉक्स ले सकते हैं, पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करके इसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। I will try to draw lines with only my hand. और ये जो है कौन है, ये राइमा। राइमा कह रही है जसबीर ने क्या किया, पेंसिल बॉक्स से उसने एक लाइन ड्रॉ की है। राइमा क्या बोलती है, राइमा ने कहा कि मैं अपने हाथों से सिर्फ लाइन ड्रॉ करूंगी, किसी का इस्तेमाल किए बिना। I will not use anything. I just use my hand and draw a line. And then Fatima called, I can draw lines with a scale. Fatima tell us that I can draw a line with the help of scale, with the help of rulers. So it's easy. You are drawn line like this, right? आपने भी ऐसी लाइन को ड्रॉ किया होगा। ज्यादातर आप स्केल का यूज करके ऐसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, राइट? ये हम कर चुके हैं, ओके? आप उसे एक बार जरूर ट्राई करना। Ekta's lines are not straight; these are curved. Here, next topic come up. Our next topic is here. You can see Ekta's line is not straight. एकता की लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं हो रही है, वो कितने भी कोशिश कर ले स्ट्रेट नहीं हो रही है। There are curved, draw more curved line by joining the dots. यहाँ पर कई सारी घुमावदार लाइन है,
अलग अलग कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, यू हैव टू ट्राई इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? लेट्स ट्राई इट. सो यहाँ पर देखिए हम कुछ कर्व्ड लाइन को क्रिएट करेंगे. ओके, वी हैव टू ड्रॉ सम कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन का मतलब होता है घुमावदार रेखा, राइट? यहाँ पर एक टाइम में ये वाली कर्व्ड लाइन को पहले से ड्रॉ किया है. ओके, वी हैव टू क्रिएट अदर वन. ओके, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक. वी हैव टू क्रिएट सम others. Let's do it. We have to make some outlines. You have to use here. You can draw. It's like this one. You have to make a round. Okay? Because we have to use here curved line and make a round. Other one. Okay? You can see here. You have to make other one curved lines. Okay? Okay? And then, yeah. Like it, right? It's called curved lines. You make other ones by yourself. Okay? You make other curved lines by yourself. आप अपने आइडिया यूज करके और कई सारी कर्व्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. Okay, it is also your homework, so do it very well. Okay, try new idea. Okay, get new idea and just create a curved lines. Next, page number 86. Please come to the page number 86. Page number 86. Fun with lines. यानी कि लाइन के साथ हमें मजा करना है. ठीक है, fun with lines. Here, जिज्ञासा has a clock. जिज्ञासा के पास एक घड़ी है. Clock means घड़ी. जिज्ञासा has a clock. She can read the time written in numbers and also the day of the week. She can read the time. इसका मतलब है वो टाइम को रीड कर सकती है. यहाँ पर देखिए हमें क्लॉक दी गई है. क्लॉक का पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहा है जिसमें टाइम है, नंबर के साथ टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें डेज के नेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है. डे का नाम भी लिखा हुआ है. She can read the time written in numbers. यहाँ पर जो नंबर्स पे टाइम लिखा हुआ है वो यहाँ पर पढ़ सकती है. And also the day of the week और even पूरी वीक का वो डे भी रीड कर सकती है. यहाँ पर देखिए हमें डे दिखाई दे रहा है. इट वॉज थर्सडे. THU इट मीन्स थर्सडे. और कितना टाइम हुआ है? 12:30. The numbers and letters are made with a straight line. Okay, do you notice it? In which line it is created? So here it's a standing line and there are so many lines here using standing line, curved line and also sleeping line. Okay, Jigyasa made more numbers and letters with used matchsticks. यानी कि जिज्ञासा इसी तरह से कई नंबर्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहती है लेकिन मैचस्टिक की मदद से. ठीक है, जो आपको घर पे करना है. ठीक है, आपको मैचस्टिक लेनी है यानी कि मैचेस की तीलियां. ठीक है, यू हैव टू यूज मैचस्टिक्स एंड मेक नंबर्स एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक लेटर्स. यू हैव टू मेक लेटर्स. ओके, कम मेक सम मोर. और यहाँ पर उसने कौन से नंबर्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं? यहाँ पर उसने क्रिएट किए हैं बाय यूजिंग मैचस्टिक्स. इट्स 98 एंड लेटर्स A and B. सो हियर आप भी इस मैचस्टिक्स को यूज करके ऐसे नंबर्स ड्रॉ कर सकती है. मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ओके, इट्स वेरी इजी. You got a fun, right? Let's make some numbers with using matchsticks. So, here matchsticks. We have to create number 4. हो गया? ये हो गया हमारा नंबर 4. फिर नंबर 5.
ये एक मैच स्टिक्स हमने रख दी. We have to put matchsticks in a sleeping line. Then we have to put the other matchsticks in a standing line. Then again sleeping line. Then again standing line. Okay, यहाँ पर मैं ऐसे matchsticks को रख रही हूँ. और other one is this one in a sleeping positions, right? So we have to make a numbers and letters by using a matchsticks. Let's make a letters. Here we have to use a matchsticks and make a slanting line. We have to put a matchsticks in a slanting positions. Other one, then we have to use again a matchsticks and put here in a slanting positions. And again we have to put here matchsticks in a sleeping position, and then we have to create a A. Okay, ये हमारा हो गया A. आप भी कुछ इस तरह से नंबर्स और लेटर्स को इजीली बना सकते हैं. ओके, कनेक्ट यूज्ड मैचस्टिक्स. आपको कुछ मैचस्टिक्स कलेक्ट करनी होगी यूज करने के लिए. हैव फन मेकिंग नंबर्स एंड लेटर्स विद दिस. जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया, आपको भी मैचस्टिक की मदद से ऐसा क्रिएट करना होगा. Is there any number or letters that you cannot make with matchsticks? ऐसा कोई letters या फिर number है जो कि matchstick से नहीं बनाया जा सकता? Is it possible? No, it's not. So there are no any number or letter that we can't make with matchsticks. Number 3. Now write some numbers using a straight lines. यहाँ पर कुछ आपको ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को यूज करते हो, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को यूज करके वो नंबर लिख सकते हैं. ओके, लेट्स फाइंड आउट. हम स्टार्ट करेंगे जीरो से. सो आई जस्ट इरेज इट. ओके, let's see. Now write some numbers using a straight line. First, we have to use number 4. Number 4 में देखिए, here we have to use a straight line and then sleeping line, then straight line. Sorry, standing line. Standing line, sleeping line, and standing line. Right? So we have to use here standing line, but we have to start with 0. So 0 में कौन सी लाइन यहाँ पर हमने यूज की? It's a curved line. It's called curved line. We have to use here curved line. So we have to write here curved line. Right? Then we have number 1. You don't have to write all of this. Okay? It's all because I have to write because you understand very well. Okay, you don't have to write all of this. Okay, you have to understand it well. We have to write number 1. So here we use a slanting line and then standing line, and then sleeping line, and then we have to use this one, standing line. Right? आप ऐसे भी वन को कर सकते हैं. कई सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही करते हैं. So we have to use here standing line. So 1 is made by standing line. We have 2. देखिए, so we used here curved line, slanting line. So slanting line and then sleeping line. It's a slanting line, and we use here also sleeping line. And sleeping line, right? You can see the difference. You have to understand what is the difference between a standing line, slanting line, curved line, and sleeping line.
Number 3, we have to use here first sleeping line, then we have to use here slanting line, and then we have to use here curves line. Okay. Number 4, in our question we have to just find out in which number we have to use standing line, right? So see, it's here. We have to use here first standing line. So we have to mention it number 4. Standing line. Then we have to use here sleeping line and again standing line, right? ओके, तो यहाँ पर हमने 6 लाइंस यूज की है, वो हमें लिखना है, ठीक है? So you have to write only first. You have to write here number 1 and number 4. Then let's see number 5. We have to use here sleeping line, then standing line, and then curves line. So we have to write here. I have to write here sleeping line and standing line, right? Okay, it's clear? So you have to write here number 5. You have to write in your textbook only digit, not this one. Okay? So you have to write first, then 4, and then 5. Let's see with number 6. 6. We have just used here slanting line and curves line. Slanting lines and curves line. Okay, number 7. First we have to use here sleeping line, then slanting line, and then again sleeping line. So we don't have to use here standing line, right? So you don't have to write its number. Then 8, yani we have used only curved line, curves line. Number 9, we have to use here first curves line and then standing line, right? Curves line, and then we have to use here standing line. So in which number we are using a standing line? It's number 1, number 4, number 5, number 9. Okay? So you have to write in your textbook there is only number 1, number 4, number 5, and number 9. Okay? You have to write only these numbers. Okay? Let's see what is our next questions. What about writing letters using straight lines? Which ones are easy? यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करके देखना होगा कि कौन सा लेटर्स में हम स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी. So I just erased it. So here we have to write letters with using straight lines. तो straight lines यानी कि मतलब होता है खड़ी लाइन. Straight line का मतलब होता है खड़ी लाइन, standing line, right? Straight line means standing lines. So we have to write here some letters. You have to write these letters in your maths textbook. First, you can see it is not straight, it's straight, right? So straight line. First we have to start with A, then we have to write here E with a straight line. See, we have a straight line, this one, and this one, right? So we have to using here, we have to make a E with using the straight lines. So you have to write here A and E
then you see F. We have to using here straight line, again straight line, again straight line, यानी कि सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, जो कि आपको यहाँ पर सीधी रेखा से जो बने होते हैं लेटर्स, वहां पर ये सारे लेटर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, अपनी मैथ्स टेक्स्ट बुक में। Then here we have a straight line again straight line, and then again straight line. Okay. Then see I for ice cream. यहाँ पर हमने यूज किया है ये स्ट्रेट लाइन, so we have to write it. Then T is tiger, right? T for tiger. So we have to use here straight line, and that's why we have to mention it. Then V से violin, right? V से van. तो यहाँ पर भी हमने यहाँ से यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन का यूज किया है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी हमने यहाँ पर के है, कैसे किंग, तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन का यूज किया है, सो यू हैव टू राइट हियर, ओके, दिस वन एंड दिस वन, सो यू हैव टू मेक these letters by using straight lines, okay. Then we have to make M because we have to use here straight lines, right? So you have to make a M. M for monkey, okay? So you should write these letters, okay? Others आपकी लेसन में कोई और लेटर्स हो, अगर आप कुछ अपना आइडिया यूज करते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन यूज होती है, वो आप लेटर्स अपने खुद से लिख सकते हैं, ओके? So you have to do it by yourself. Next, find out whereas numbers and letters are written with a straight lines. यहाँ पर भी और कई सारे आपको नंबर्स और लेटर्स फाइंड आउट करने होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन से बने हो, ठीक है? So do it by yourself. ये आपके होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा। आपको देखना है कि कौन से नंबर्स आप स्ट्रेट लाइन को यूज करके बनाते हैं, कौन से लेटर्स आप स्ट्रेट लाइन को यूज करके बनाते हैं। इसे बोलते हैं अल्फाबेट को बोलते हैं लेटर्स, और 1 to 9 0 to 9 को बोलते हैं नंबर्स, जो कि हमने अभी भी किया है, ओके। Then we have a dancing line. What is a dancing line? Let's see. Remia saw a traffic policeman giving a direction to her vehicles. रेमिया ने एक ट्रैफिक पुलिस को देखा जो कि लोगों को डायरेक्शन दे रहा था, राइट, जो कि वाहन व्हीकल्स होते हैं ना, लोगों के वाहन होते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। Does a traffic policeman sometimes make a cow line? क्या आपने देखा होगा, क्या आपने देखा है कि कोई ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो काउड लाइंस क्रिएट करता है? काउड यानी कि घुमावदार, आपने कभी देखा है? ऐसा ऐसा करते हैं वो लोग, राइट? आ जाओ यहाँ पर आओ, यहाँ से जाओ, तो उसे बोलते हैं काउड लाइन। So we have to write here, yes, traffic policemen sometimes make a cow lines, cows lines. Next, Remia यहाँ पर, right? Her name is Remia, ठीक है? Remia tried to act like a traffic policeman. Remia भी traffic policeman की तरह कुछ act कर रही है। She made many straight and cow lines. उन्होंने कई सारी cows line और straight line को create किया है। It was fun. ये बड़ा मजेदार है। It looked like a dance. और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि सब लोग डांस कर रहे हो, right? You can see it here clearly. जब कोई डांस करता है तो कई सारी रेखा बनते हैं, जैसे ऐसा करता है, ये है रमैया, तो वो ऐसा करता है तो बन जाता है स्लीपिंग लाइन, वो कुछ इस तरह से करता है तो हो जाता है स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से करता है तो स्लीपिंग लाइन हो जाती है, इस तरह से वो करती है तो स्टैंडिंग लाइन हो जाती है, इस तरह से करती है तो काउड लाइन हो जाती है, राइट? So she make many other lines. Try the dance steps given below and enjoy like Remia. आप भी इस तरह से डांस कर सकते हैं और आपको देखना है कि आप कौन कौन सी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। Look at his arms. Look at his arms. They look like a standing. Here, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन क्रिएट हो रही है, राइट? And they look like standing and sleeping lines. और यहाँ से काउड लाइन, यहाँ से स्लीपिंग लाइन, देखिए, ठीक है? तो आप भी कुछ इस तरह से डांस कर सकते हैं और अलग अलग लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन विद डॉट्स, यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिजाइंस क्रिएट करनी होगी, ओके? डू इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज वी हैव टू क्रिएट इन अवर मैथ्स वर्कबुक। जब मैथ्स वर्कबुक में ये सारी एक्सरसाइज पहले से अवेलेबल है,
तो ये सारी एक्सरसाइज हम मैथ्स वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। लाइन्स इन पिक्चर हियर, पेज नंबर है 89। नैन्सी सो दिस पिक्चर्स एंड मेड बाय फोक आर्टिस्ट। कोई फोक आर्टिस्ट है, उसने ये सारी पिक्चर्स ड्रॉ की है, ठीक है। ये जो पिक्चर्स क्रिएट की है वो कोई फोक आर्टिस्ट ने ये पिक्चर्स क्रिएट की है। लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स। यहाँ पर आपको देख रहा है कि कौन सी लाइन का यूज करके उसने एक पिक्चर्स को क्रिएट किया है। सो they used curved line, slanting and sleeping line। जो भी पेंटर है, जो भी आर्टिस्ट है, उसने यहाँ पर कर्व्ड यानी कि घुमावदार लाइन का यूज किया है, स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी रेखा का इस्तेमाल किया है, स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी रेखा का इस्तेमाल किया है, एंड स्लीपिंग लाइन यानी कि शयन रेखा, उसका इस्तेमाल करके ये सारा पिक्चर्स बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पर वो सारी लाइन नोटिस कर सकते हो। ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स लाइक दिस। अगर आप चाहे तो आप अपनी होमवर्क नोटबुक में या फिर रफ बुक में ऐसी कोई पिक्चर्स बना सकते हैं जिसमें सिर्फ आपको लाइन्स का यूज करके पिक्चर बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यस, यहाँ पर आगे पेज नंबर 80, यहाँ पर 80 है, पेज नंबर 80 है ना। एड अवर पॉइंट, ये वाला हमारे थोड़ा बाकी था जो कि हमने अपनी वर्कबुक में पहले से कंप्लीट किया है। इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर वर्कबुक एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इट, राइट। सो वी हैड कंप्लीटेड, ये हमारी वर्कबुक में हमने कंप्लीट किया है। तो ये जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसे आपको कंप्लीट करनी होगी, ये वाली और ये वाली। You have to complete the exercise on page number 80, 81 and 82. Okay? These three pages you have to complete it. Okay? It is also your homework because it's already done by us in our maths workbook. Right? तो ये हम पहले ही मैथ्स वर्कबुक में कर चुके हैं, इसीलिए आपको मैथ्स की टेक्स्ट बुक में खुद से करना है। Do it by yourself. Okay? Then bye. Have a nice day. You take very good care of yourself.